वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्लिक ऑन फ्लेवर्स ऑफ रमजान पावर्ड बाय योप्ले योगर्ट एंड ग्रैंड मिल्क फ्रेश चक्की आटा। मेरा नाम है गौरव, नाम तो सुना होगा। अब वक्त आ चुका है हमारी इंटरनेशनल रेसिपी का। देखिए, फ्लेवर्स ऑफ रमजान का मजा ये है कि हम आपको अलग अलग दुनिया के फ्लेवर्स खिला रहे हैं यहां आपके घर पे बैठे बैठे। एंड इसके लिए हमने थोड़ी सी मदद ली है। हम आ गए हैं स्काफा, विच इज द स्कूल ऑफ कुलिनरी एंड फिनिशिंग आर्ट्स दुबई। यहां पर कई सारे शेफ्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं टू ब्रिंग इन दोज इंटरनेशनल रेसिपीज एंड आपको सिखाई जाएंगी यही। अब देखिए, हम जो अगली रेसिपी बनाने वाले हैं दैट्स अ फ्रेंच रेसिपी। एक्चुअली आई एम नॉट सो श्योर अब ये क्लासिक फ्रेंच रेसिपी बन चुकी है, बट इसकी ओरिजिन्स हैं जर्मनी में। व्हाट वी आर गोना टीच यू इज अ मशरूम कीश। एंड यू नो, पिछले ज़माने में या थोड़े से पुराने ज़माने में क्योंकि मशरूम कीश या जो भी कीश आप बनाएं उसमें प्राइमरीली जो फिलिंग होती थी वो वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स की होती थी, तो इसीलिए कई लोग इसे बहुत ही अनमैनली डिश भी मानते थे। एंड ज़्यादा पीछे क्यों जाएं, यू नो, एज रिसेंटली एज 1982 में एक बुक भी रिलीज हुई थी एंड इट वाज एक्चुअली अ बेस्ट सेलर एंड उस बुक का नाम था रियल मैन डोंट ईट कीश। अब आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल ट्रू इन 2014, क्योंकि मैं कीश खाता हूँ, जो शेफ बना रहे हैं वो भी मैन है और वो भी कीश खाते हैं। एंड आई थिंक अमिताभ बच्चन भी कीश खाते होंगे। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कीश नहीं खाता, ये किसने बोला? Hello, my name is Francisco Raya. I'm the school director at SCAFA. Today we're going to make a French dish. We're going to make a quiche. So we're going to start with the dough. For that, I'm going to use all-purpose flour. And I need 300 grams of flour. And 200 grams of butter. What we need is to mix perfectly the butter and the flour in a dough that needs to be very, very crumbly. Once the butter and the flour are completely mixed and crumbly, we're just going to put pressure on it. I have a plastic bag. I prefer using plastic bags instead of using cling film. And I'm just going to put it in the fridge. After 20 minutes, my dough is going to look like this, and I'm just going to get a ring and I'm going to start setting it in just with my hands. First the bottom, and after we're going to just get small pieces and we're going to start arranging it on the side. So all my mold is covered, it's even. As I've been working with my hands, the butter got a bit hot, so I need to put it on the fridge for 10 to 15 minutes. I'm going to put it on the fridge, but I have another one ready. This has been on the fridge. It's firm already. And now we need to bake it. We need to pre-bake it. So I'm going to get just a piece of baking paper. We use a mix of chickpeas, beans, whatever, just to put some weight in it so when we bake it, it's not going to rise. And we're going to put it in the oven, preheated oven, 170 degrees, and we're going to pre-bake it for 10 minutes. While the dough is baking, we're going to continue with our stuffing. In this case, we're going to use mushrooms. We're just going to chop it, slice it. We're going to start our stove. We're going to put a bit of our oil. Just a bit. Mushrooms are going to act at the beginning, they're going to act as sponges. They're going to soak all the fat, but they're going to give it back. Our oil is hot, and we're going to add our mushrooms in. We're going to season them with salt and with some nice pepper. You're going to use, for this stuffing, I need like 300 mils of cream. And I'm going to need 1 egg per every 100 milliliters of cream. So I'm going to need to break 3 eggs. I'm going to add my cream in. The eggs are going to thicken my royale. I'm going to season it, salt, also some pepper. I think that's enough.
And I'm just gonna add it into my mix. So our royale is ready. We need to check if our dough is ready. We're just gonna take it out, being very careful. We use the paper, so it's not an issue, just removing all the beans. And yeah, our dough is ready to be cooked. And we're gonna start filling it in. First with the solids, so they are evenly distributed in the quiche. Like that. I'm gonna add some cheese also, so it's evenly distributed. That's gonna help us with our color, with our texture and everything. And I'm gonna pour in the royale. And our quiche now it's ready to be baked. We're gonna put it again in the oven, 170 degrees. This is gonna take around 15 minutes. It has a very nice color. We're gonna just leave it here. We're gonna open it. And we're ready for plating. We're just gonna go in the center. When you cut, you need to be very, very convinced, because as it has a lot of butter, it's gonna be very crumbly, our dough. Using my same knife, I'm gonna remove it. I'm gonna plate it. Some nice tomatoes. I'm gonna take some leaves just to make it look nice. I'm gonna put some dressing for our salad. So there is our mushroom quiche. Very nice, very simple. From this recipe we can get 8 to 10 pieces. Enough for a big family. Just wanted to show you how flaky this dough is. Simple, nice, tasty. मशरूम कीश बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा और 200 ग्राम बटर लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब एक प्लास्टिक फिल्म में आटे को रैप कर दीजिए और 20 मिनट तक रेफ्रिजरेट कर दीजिए। अब एक बेकिंग ट्रे में आटे को सेट कर दीजिए और 10 से 15 मिनट तक ट्रे को रेफ्रिजरेट कर दीजिए। रेफ्रिजरेट करने के बाद बेकिंग पेपर को ट्रे के ऊपर सेट कीजिए और ऊपर से बीन्स डाल दीजिए ताकि प्रेशर बना रहे। अब 170 डिग्रीज के प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक कीजिए। अब फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम कीजिए और चॉप्ड मशरूम्स को नमक और काली मिर्च के साथ टॉस कीजिए। एक बोल में 3 अंडे को क्रीम के साथ विस्क कीजिए और टॉस्ड मशरूम्स डालकर मिक्स कीजिए। अब बेकिंग ट्रे में पहले मशरूम्स डालिए, उसके ऊपर चीज डालिए और फिर सॉस को स्प्रेड कर दीजिए। अब 15 मिनट के लिए 170 डिग्रीज के प्री हीटेड ओवन में बेक कीजिए। एक स्लाइस को कट कीजिए और टमाटर और थोड़े पत्तों से गार्निश कीजिए। Scotch Brite tip of the day. How do I clean my non-stick frying pan? What I do is I take a little bit of salt and a damp sponge cloth and rub the pan. I rinse it thoroughly with water, and if I want to replenish that oil coating on the pan, I take a little bit of cooking oil just to give it that nice gloss finish.